Thank you. Please sit down. थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा can we hear them talk? बातें करते हैं, थोड़ा सुनते हैं. Thank you. So sweet. Please sit down. Good. Okay, so before we go to media Q&A, I also want to ask a few things. Varda ma'am. Yes. Okay, it's been 8 years. Heropanti 1 to Heropanti 2. Journey, your feelings, your emotions, your entire experience. Oh my God, it was like a very very beautiful feeling. तो जैसे मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, फर्स्ट टाइम साजिद लॉन्च कर रहे थे टाइगर को, तो वैसी ही फीलिंग आ रही थी. ऐसे लग रहा था जैसे कि अच्छा लगता है 8 सालों में टाइगर की जो सक्सेस रेट रही है, ये देख के तो और इतना अच्छा लग रहा है. आई एम रियली इट इज वेरी emotional moment for me because इतना प्यार, इतनी मोहब्बत किसी को. This journey has been beautiful and we've had beautiful 8 years and looking forward to 80 more years. Jake, we love you. Thank you, Varda ma'am. एक moment और है यहाँ पर. एक और चीज है. महबूब sir, रहमान sir, Ahmed sir, the trio, the Rangila team, the madness, the magic. So I want to know from each one of you, how's the emotions, how's the feeling right now? How does it feel? 3 of you together? Actually, when we collaborated again, it was like coming back to home and family, and we reminisced Rangila days. और फिर वही फायर आया जो रंगीला में था, और आपको और दिखेगा गानों में इंशाल्लाह. So and जैसा रहमान ने कहा कि हम यंग हो जाते हैं अहमद के साथ काम करते हैं, because this guy has so many ideas in his head, lyrically बोलो या musically बोलो, and every song believe us, हंसते खेलते भी क्या, मजे भी लिए, और the result is in front of you. And I would like to thank Tiger and Tara and all, वर्दा जी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे गानों में बड़ा रंग भर दिया. Thank you. Thank you sir. Rahman sir. When I make music, actually, the things I do is like from classical music to folk to Tamil to Telugu to English. So I need an anchor to look. When I look at the face, I reflect that. So this is the face. And he said, "Let's do this." And whenever I play something and I send it to him, I love this. So that made us actually make. The tone of this whole music came from his vision. Baby face. Ahmed sir, you want to add to something? I won the Oscar after what he said. I've got 2 Grammys What a now. compliment. So, it's a pleasure always to work with AR and the team who by all of us. And I began my career as a choreographer in 1995 in Rangila. And I got the love. तो इसमें भी हम वही चाह रहे थे कि वही मैजिक क्रिएट करें. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड जेन्युइनली इट फील्स कि रंगीला को जो 26 साल हुए वो बस यूं ही गुजर गए. बिकॉज व्हेन वी स्पीक टुगेदर, वी वर्क टुगेदर, द एनर्जी इज सेम, एंड ऑफ कोर्स वी आर यंग एंड यू ऑल कुड सी इट, एंड द म्यूजिक इज रियली, आई कैन से दिल से किया है, सब बोलते हैं, बट ये हमने दिमाग से भी किया है. Because youngsters को भी पसंद आना चाहिए, and I think so. The alfaz, the words, what he has used, the kind of music AR has given is very, very, very today, keeping in mind the beautiful melody also. So I'm grateful. Also, I think people ask me, do you keep the hero in mind, while doing music? The way he dances, I think, pushes us to even challenge him. That's true. I'm That's dead true. sure this is one of those tracks. जब भी रेडियो पे whenever I'm playing or something, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जैसे प्ले होना शुरू होता है, हमें बहुत बार बोला जाता है गाने मत, बीच में मत गाना है. एज एन आर्टिस्ट तुम्हें बहुत तुम्हें एक्साइटमेंट हो जाती है, तुम लोग गाना गाने लग जाते हो. So there are certain tracks जिसमें बिल्कुल नो होता है. Play and just get out of the studio. चुप करके हट जाओ. I'm sure ये वो गाना होगा जिसमें मुझको टाइम लगेगा. गाने की कोशिश मत करना, नाच लेना पीछे से. Thank you so much. Before now I open the house for media Q&A. Please go ahead and ask your questions. The entire team is here. Please. जब भी आप और साजिद साथ में आते हैं तो आपकी जो फिल्में कमर्शियली हिट होती है, क्या वो एक सक्सेस मंत्र है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं हम, एंड
you know, I work very hard for him, he works very hard for me, and it's like a family relationship. मैं तो खासकर बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि I have such a, you know, if not the best producer, I have one of the best producers in my corner, who's also like a father figure. So, I mean, the least I can do is work my hardest for my family, and yeah, I think that's all. कोई secret weapon नहीं, secret मंत्र नहीं. टाइगर एंड पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस फॉर द फैब ट्रेलर, और गाना भी बहुत अच्छा निकल के आया. टाइगर इधर इधर आपके सामने. एक्शन जो है बड़ा ही स्टाइलाइज्ड है और हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन दिखता है. वैसे तो आप जब भी फिल्म में आते हैं एक्शन जो होता है वो पिछली फिल्म से ज्यादा बेटर करने की आप कोशिश करते हैं. एक तो कितना प्रेशर होता है, और दूसरा जब इतनी खूबसूरत हीरोइन हो, ऐसे प्रोड्यूसर्स हों, ऐसे डायरेक्टर हों, कमाल के लोग हों, और खतरनाक विलन हो नवाज टाइप का, तो कितना आपके अंदर प्रेशर होता है कि पिछली फिल्मों से ज्यादा बेटर परफॉर्म करना है. प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होता है, खासकर क्योंकि जैसे आपने कहा, यू नो, आई हैव गॉट सच अमेजिंग पीपल अराउंड मी, सच एन अमेजिंग टीम, तारा, फरहान, साजिद सर, महबूब भाई. It's my pleasure and honor to be working and sitting right next to Mr. A.R. Rahman sir also. So thank you very much for the honor, sir. Of course, my favorite director, Ahmed sir, who's also my family. So when I have a team like this, you know, I don't take any of the pressure. He actually takes all the pressure on himself. तो वो खुद सब प्रेशर स्ट्रेस लेते हैं और यू नो खाली बोलते टाइगर को ये करके दिखाना, सर कोशिश. कई बार ऐसा हो ही जाता है एक ही टेक में, दो ही टेक में, एंड आई डोंट क्रेडिट फॉर माई सेल्फ. यू नो, आई गिव हिम द क्रेडिट, आई गिव द एक्शन टीम द क्रेडिट, आई गिव माई बॉयज द क्रेडिट, यू नो, who are my team, Kuldeep, Nadeem, Vikram. That's pretty much it. And as for आपका दूसरा सवाल क्या था, sorry? विलन और ऐसे विलन. I mean exactly. नवाज सर, अभी नवाज सर के सामने तो मैं तो एक बोल नहीं पाऊंगा अभी. But I'm basically, you know, a big fan of Nawaz sir. He's such a senior actor, and so much to learn from him while just watching him perform on set. So, like I said, किस्मत मेरी अच्छी है क्योंकि I have such an amazing team around me, so I take no pressure. Thank you. Hi, yo, so here for Instant Bollywood. Congratulations to the entire team. The song and the trailer is fab. हीरोपंती से आपने शुरू किया था, और अगर मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि लोगों ने पहले हीरोपंती को कहा था कि टाइगर लुक्स लाइक हीरोइक पंती एक्चुअली, यू नो, मतलब. और मैं आई बिलीव मी लाइक आई हैड रिव्यूड इट के टाइगर इज फैब, और आगे जाके यू विल डू बहुत ही अच्छा करेंगे. वो एक फेज, और आज के फेज में यू हैव सच अ बिग फैन फॉलोइंग. You are the best, you can say in dancing, you can say best body, best fight. I'm not the best. I feel it like that. I'm not the best. You know, work very hard. how do you see that particular thing? जो पहली हीरोपंती थी और आज जो हीरोपंती में उस टाइगर श्रॉफ में और आज के टाइगर श्रॉफ में क्या फर्क दिखता? उस टाइम पे दाढ़ी नहीं आती थी, अभी दाढ़ी. उसके अलावा कुछ कोई फर्क नहीं. यू नो, आप सबका प्यार है, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. यू नो, माई टाइगर रिंग्स एट द बैक राइट नाउ. So whatever little I am, it's all thanks to my supporters and my well-wishers, and it's because of them I love you, Mom. You know I love you, Mom. You said like young team रहती तो you know हम भी young. Definitely you all are young because हमें दिल से और दिमाग से भी सोचना पड़ता है, as Ahmed said. जब ये पर्टिकुलर गाने की बात करते हैं हम महबूब साहब के लिए, खास अगर आपने कहा था यार ऐसे कुछ यंग वाला गाना बनाना है जिसमें फक आई डोंट नो फक कर साउंड, तो उनका रिएक्शन क्या था एक्चुअली? आपका रिएक्शन इसकी सोच एक्चुअली कल से कमेंट भी बहुत पढ़ रहा हूँ. He's highly twisted man. So from 25 years he'll tell me, he'll give the F words like whatever the Urdu, the F, he'll always give it to me, I reject it. This man okay with it. अच्छा, आपको क्या लगा? आपने क्या सुना? हाँ, जैसे जिसकी क्या सोच, सुना आपने? हम तो अपना लिखे थे अच्छे से. दफाकर. क्या चल रहा है? क्या सुन गया? इस बात का डाउट था पहले हमको, पर हमने सोचा चलो यंगस्टर्स तो एंजॉय. I do 3 languages: Tamil, Telugu, and Hindi. So
one word in Telugu which is the respect is a bad word in Hindi. So I have to deal with all this stuff. Tiger on your right. यहाँ पे Tiger on your right. यहाँ पे. सॉरी कहाँ देखूँ यहाँ पे. On your right. इधर Tiger. सत श्री अकाल. First of all, congratulations to you and the team. बहुत अच्छा लग रहा है कि after pandemic we are watching you again और बड़े पर्दे पे पिक्चर भी हमें देखने मिल रही है. So congratulations first of all for that. Thank you so much. Tiger, मेरा सवाल आपसे ये है कि what was your reaction when you got to know that A.R. Rahman sir, the great A.R. Rahman sir, is actually the voice. I mean, I was privileged and I was in awe, and my family, myself, are very huge fans, like every one of you in the theatre right now. My mother had the privilege and honor to work with Mr. A.R. Rahman as well. So she just told me how amazing of a person he is, other than the musical genius and talent. So I've been waiting for this day to meet him personally, and him being the vocals to my face, for the first time as a hero, it's a big thing. I feel it's another milestone in my career because I have his voice, backing me. So Tiger, मेरा आपसे सवाल एक और है कि जैसे फिर से पैंडेमिक के बाद फिर से फिल्में शुरू हो चुकी हैं, बिग स्क्रीन का मजा बिग स्क्रीन पे ही होता है. So जिस तरीके से ये जो दौर रहा है, हाल ही में जो फिल्म द कश्मीर फाइल्स जिन्होंने 200 करोड़ की कमाई की है, what do you want to say about it? A film that has started a movement. What do you want to say about it? I mean, it's fantastic. It just goes to show that people are going to the theatres, and Khaskar, if I want to be greedy, Heropanti is a theatre film. So I'm very, very happy that people are coming to watch films in theatres again, and it's a great, great feeling, and a great time for our industry. I think it's sort of a rebirth. Tiger, your left. Tiger, your left. Rahul here from the Filmy Charcha. मेरा सवाल आपसे ये कि 8 सालों में काफी कुछ बदला है, लुक्स बदले हैं, काफी कुछ बदला हुआ है. एक चीज और बदला इस बार कि इस बार फिल्म ईद पे आ रही है और ईद के लिए सलमान खान जाने जाते हैं, सब लोगों को पता है. तो एक्साइटमेंट हर बार की तरह सेम है, इस बार कुछ अलग है कि सलमान खान का जो फिल्म आता है ईद पे. एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान. हम तो बिजली है उनके सामने, हम तो टाइगर कब है उनके सामने. पर किस्मत अच्छी है मेरी, लाइक आई सेड, that we got what Simba, yeah, you can say I'm Simba, but very, very happy. For me it's a big deal to come on Eid, और हालांकि I can't take the credit goes to Sajid sir, and it was his decision to give us that release pad, that launch pad. तारा, इससे पहले आपने टाइगर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी काम किया था, तो क्या कुछ अभी तक आपको लगता है टाइगर में कुछ बदलाव आया है कि सेम फीलिंग काम करके आपको लगा कुछ अलग? नहीं, बिल्कुल नहीं. And thank God for that. He's still humble, kind, generous and giving as a co-actor, and we had more fun on this film or more fun on Student, I can't decide. But On this film. Decide. You have decided. Chalo, on this film for sure, and of course working with Ahmed sir has been such a riot and a ball, and it's been so much fun. So I think the whole experience of working with Sajid sir, Balda ma'am again, after Tadaf, doing Heropanti 2, and of course working with Rahman sir has been so fantastic for all of us, and of course Mehboob sir as well. So it's just been a wonderful experience. Tara, आपसे मेरा सवाल है. मेरा ये सवाल है कि अगर A.R. रहमान सर की टीम हो और साथ में टी सीरीज का साथ, तो एज अ प्रोड्यूसर आप कितनी कॉन्फिडेंट हो जाए? जैसे आपने कहा A.R. रहमान सर एंड माय ब्रो Ahmed was saying कि ऑस्कर्स और ग्रैमी के नीचे तो हम कुछ सोचते ही नहीं है. सो या इट फील्स वेरी नाइस. हमारी पिछली हाईवे ऑल्सो वाज ह्यूज हिट, एंड तमाशा भी लोगों को इतनी पसंद आई थी. तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि A.R. रहमान सर की इतने प्यारे गाने हैं. अब तो आपने सुना ही थी, दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा एल्बम बनाया. And of course, TCB's Bhushan की marketing is fantastic. So fingers crossed. Looking forward to a great success again. Third time, even more luckier. Tara, Thank you, right on your right. Hi, Rohit from People's Journal. Tara, my question is because Heropanti is your head. Any sense of responsibility or any kind of added baggage? No, I don't think there is baggage. My first film was also exactly like, I think, Heropanti, in the sense that people obviously think that there is a sense of responsibility, and there is. But I feel like when you work with such a supportive and fantastic team, you don't feel that pressure. And I genuinely mean that. I know everybody says that.
But when you have the team that I'm sitting with right now, I think it's been the most fantastic journey, because not even one day did anybody make any of us feel like there was stress or pressure to carry on the franchise. And I think that's the joy of working with Sajid sir and the joy of working with Ahmed sir as well. Hi, Ahmed. Hi, side from Homewood Center. So मेरा सवाल अहमद सर से है और टाइगर से है. So अहमद सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि रील्स का जमाना है, एंड रील्स को ध्यान में रखते हुए गाने पर कितना ज्यादा काम किया है आप लोगों ने इस फिल्म में. एंड टाइगर, आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी तक ज्यादातर आपने जो भी फिल्में की है, हर फिल्म का सीक्वल रहा है. वेल, ये आपको सिर्फ कोइंसिडेंट है या फिर कोई स्ट्रेटेजी है आपके काम करने की? इसके बारे में बताइए. मैं सोच रहा था हमने तो बनाई है रील के लिए, थिएटर के लिए और रील्स पे चल जाए तो इट्स ग्रेट, बिकॉज जो वर्ड्स हैं इस गाने के इज एब्सोल्युटली, आप देखो दफाकर इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, बट उसके दो मीनिंग होते हैं. आई विल एक्सप्लेन. एक होता है कि अच्छा लगा हर दफा कर, नहीं अच्छा लगा दफा कर. सो दिल जो बोले 100 दफा कर, कोई ना माने अब दफा. तो दफा करके दो मतलब है, आज आप समझ जाएंगे. सो फॉर रील्स डेफिनेटली बी ग्रेट फन एंड द एक्सप्रेशन इज सो करेक्ट, बट तीसरा मीनिंग किसी और को निकालना हो तो निकालना. एंड मोस्ट वेलकम. द मोर द मीनिंग्स द मेरियर. एंड ऑफ कोर्स रील्स में चलेगा ये, दैट्स व्हाट वी फील. नहीं चला तो दफा कर. Last two questions. Sorry. मैम, हीरोपंती और बागी के अलावा फिलहाल तो आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी फ्रेंचाइज राइट नाउ. बड़ी में छोटे में आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉरवर्ड. दैट वे आई एम जस्ट लकी, आई गेस. It's there's no planning behind it. I'm just lucky that all of you have accepted both Bagi and Heropanti for it to have another chapter. So yeah, thank you so much. Thank you to all my fans and well-wishers and my extended family. Ahmed sir, over here towards my question to you is, Nawazuddin Siddiqui is playing a negative role in the film. He has played a negative role in another Sajid Naderola production, that is Kick. So when you were conceived, what was the idea to keep it different from Kick? See, that's a good question because क्या है कि टाइगर ने सीरिया खत्म कर दिया बागी 3 में, एंड 2 में ही फिनिश्ड पूरा हुआ सब. तो फिर ढूंढ रहे थे तो क्या बोले ना, वर्ल्ड वांट्स टू किल. सो नाउ वर्ल्ड इज बिहाइंड टाइगर, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी. सो कोई विलन मिल नहीं रहा था थैनोस जैसा. सो व्हाट वी हैड टू थिंक इज गेट अ विलन विद माइंड एंड अ मैन हु कैन एक्सप्रेस विद हिज आईज. तो वी रोट अ कैरेक्टर एंड उस कैरेक्टर का नाम निकला लैला. एक आदमी जिसका नाम लैला है एंड ही इज अ कंफ्यूज सोल. अब इसको कौन पोर्ट्रे करेगा? सो द होल फिल्म देयर इज नो एक्शन, बट देयर इज सो मच एक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो ही प्लेज अ मैजिशियन. तो एक ही नाम जहन में आया था और वही नाम था, वो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी. सो मैंने ऑफर्ड इन द फिल्म, ऐसे नवाज भाई फिल्म आपको नरेट कर रहा हूँ, आपका कैरेक्टर नरेट कर रहा हूँ, और तीसरी बात बोल रहा हूँ आपको करनी है, ऑप्शन ही नहीं है. बट व्हेन ही हर्ड द कैरेक्टर ही लव्ड इट. बट डेफिनेटली जब सलमान खान साहब के सामने कोई एक विलन खड़ा रह सका है ऑफ लेटली, वो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी विद द डील डॉल एंड द फिजिकलिटी व्हिच इट डजंट हैव. उसके बाद आई थिंक टाइगर के सामने we wanted that same vibe, and of course it was done by my elder brother Sajid Naderola. So I said, why not proceed it further ahead? So that's why Leila came and Nawaz bhai came on board. Hi, Tiger to your left. Tiger over here. Russell from Bollywood Live. Hey. Hi, how are you? So the song and the trailer both are looking fantastic. My question to you is that your movie is coming on Eid, and there is another film that's also coming, Run with Hariko. It's a clash. So is this a measure of how quickly your stardom has grown, that you can clash with a film that has two seniors like Ajay Devgn and Amitabh Bachchan? Honestly, I can't compare to such major superstars like Ajay sir and Amitabh Bachchan sir. मैं तो फिर नहीं बोल पाऊंगा, वो शब्द नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं वो बराबर हूँ उनके सामने. तो आप समझ लो. I have way too much respect and I'm way too much of a fan of both of them to even
be spoken about in the same breath as them. But thank you so much for your generous words. Halanki, I know Runway 34 is looking fantastic. I myself am looking forward to watching that film. I'm looking forward to watching this film also, and I hope you guys all are as well. But I think I think all films can flourish together, honestly. And with a date like Eid, I think there's space and time for everyone. Eid पे ये देखना, बासी ईद पे वो देखना, या Runway 34 देखना Eid पे और इसको बासी ईद पे देखना. It's as simple as that. You don't have to clash or anything. We can all flourish together. So, also, Tiger, is this when it comes to action? Do you think so? The Bollywood action hero has too much of pressure compared to any action hero around the world, like say even Hollywood action heroes? Because when people go to see Vin Diesel, Rock, or even Arnold Schwarzenegger, Sylvester, they just used to go to see action. When it comes to Bollywood action heroes, whenever it's an action film is looking completely action oriented, still people say to dance bhi hai, drama bhi hona chahiye, ye bhi hona chahiye, wo bhi hona chahiye. So you think so Bollywood action heroes have got too much to face? I think there are two different audiences. There are two different sets of expectations. We have music is such an integral part of Bollywood, and not just Bollywood, I just say Indian cinema. So that being said, I think it's just in our DNA, and I don't take it as a pressure. I love to dance. I love to fight. Action में छोटे-मोटे चोट लगते रहते हैं, तो so dancing is more fun. But yeah, I would say it's a very holistic approach for an action hero in Indian cinema, because we have to do a little bit of everything, and it's hard work, but I'm blessed and I'm very thankful. छोटी मोटी चोट ऐसी है, मतलब जो एक हफ्ता हम एक महीना बिस्तर से ना निकले वैसी चोटें होती हैं, जो इनके लिए छोटी मोटी चोट है. Arun. Last question, we'll take the last question. Tiger, congratulations. टाइगर, व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपकी मम्मी का रिएक्शन क्या रहा ट्रेलर को देखे? वो काफी पॉजिटिव फर्स्ट आपकी मूवी का देखती है, तो व्हाट वाज योर मदर रिएक्शन? मिस्टर रहमान, टाइगर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से यूक्रेन एंड रसिया में वॉर चल रहा है, आप मानते हैं कि एक ऐसे Please. बाद में मिलो. Last question. My question to Rahman sir is congratulations after Satangir. क्या अभी अच्छे दिन आ गए म्यूजिक के कि लोग और भी म्यूजिक सुनना चाहेंगे? एंड सेकंड क्वेश्चन फॉर टाइगर इज, आज मैंने प्रोफाइल में इनका देखा कि ये अच्छा गाते भी हैं, क्या आप उनसे एक लाइन गवाएंगे आज? Music has always been there. I think the way we promote it, and it is a responsibility of our society to bring back the beauty of music, whether it's classical music or folk music, and some of the stuff happens in movies, but I take it as a personal thing whenever I can insert the classics of the past, bringing back the beauty, because people take what we give, and we have a responsibility. Thank you. Okay, एक second. Now before we end, just one thing I want to say. Okay. आज I'm missing somebody, and that's the most important person इस film के. हमारे बड़े भाई साजिद वाला, he couldn't attend because he is not well. So I can't say it's a vacuum because my sister Varda Nadiadwala is here. So but missing him, and I wish that he was here holding our hand and standing with us. But nevertheless, so just wanted to say that we really miss you, Sajid bhai, and the whole team is here and missing you. One last question, Navin. in the center. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन. एज अ एक्शन एक्टर, एक्शन स्टार पैन एशिया में काउंट किया जाता है, तो हाउ डज इट फील? बिकॉज इसमें बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिसमें आपका भी नाम मेंशन है, बिकॉज आपकी मूवी इस बात को बयान करती है. हाउ डज इट फील इफ यू वांट टू से? Well, it's a great honor, sir, or just to be given an identity amongst so many esteemed people, so many high esteemed people. It means a lot to me. मैं बहुत ही grateful हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और
इस बात को लेकर काफ़ी डरता हूँ भी, क्योंकि there's a lot of expectation. To be an action hero, it's very tough to keep reinventing ourselves and to give you guys a good show again and again. And staying healthy is just something that I've just been trying to do, especially now that I'm a little older than what I used to be. Sorry, older than, yeah. Say that right? Say older. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Wish you all the best for the film. Thank you so much. Photo up.